महोदय, माननीय प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स and the general Gen Z present in front of me, आप सभी को मेरा प्रणाम, गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जय सेवा, जय जोहार, जय भीम। यही विविधता की एकता इस देश में है और ये भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। साथियों, जो देश जिसमें 12 ऑफिशियल भाषाएं हो, जिसमें सनातन धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, पारसी जैसे अनेक धर्म हो, उस देश की जो एक खासियत है, 1600 अलग अलग भाषाएं हैं और यदि उनमें डायलेक्ट्स जोड़ दिया जाए तो पता नहीं और कितनी होंगी। बुद्धिज्म, जैनिज्म भी है। हर क्षेत्र का अपना अलग कैरेक्टर है। अब महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, विदर्भ है, मुंबई शहर है, वेस्टर्न महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा है और यहाँ भी आदिवासी क्षेत्र भी हैं। इनमें विविधता में एकता है, खान पान में, रहन सहन में, जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी। और इस विविधता में एकता यहाँ की ताकत है। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए, वे गोपाल कृष्ण गोखले जी के पास गए कि मुझे भारत की आजादी के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, 1 साल तक तुम पूरे भारत का भ्रमण करो और जाकर देखो कि देश के हालात क्या हैं, किस प्रकार से किस क्षेत्र के लोग कैसे रह रहे हैं। और एक बात याद रखना, आंखें खुली रखना लेकिन जुबान रोक के रखना। ये बहुत बड़ी बात है और जितनी जेन ज़ी यहाँ बैठी हुई है उनसे मैं गोपाल कृष्ण गोखले जी का वो संदेश कि अपने घर, अपने मोहल्ले और अपने गांव और अपने शहर तक सीमित मत रहिए। अगर आप इस देश के वास्तविकता को जानना है, मैं स्वयं आई एम ए रिलक्टेंट पॉलिटिशियन। मैं अपने छात्र जीवन में छात्रों के चुनाव में वोट डालने तक नहीं जाता था। मुझे राजनीति से नफरत थी, लेकिन कुछ ईश्वर का एक वो विधि है। मुझे इन सब बातों से हटकर जब मैं अपनी इंजीनियरिंग पूरा कर रहा था, मास्टर्स करना चाहता था, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो मैं अपना मास्टर्स अमेरिका से करने जाना चाहता था। मुझे आकर अपने परिवार में रहना पड़ा। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, 1969 में मेरा छोटा सा कस्बा था, 8,000 की पॉपुलेशन होगी। चुनाव हुए, 8 पार्षद जीत कर आए। आपस में उनका झगड़ा हुआ, कौन बने। 3 कांग्रेस, उस समय जनसंघ होती थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, भारतीय जनसंघ थी। तो 3 कांग्रेस, 3 जनसंघ और 2 निर्दलीय जीते। Bapat for that wonderful introduction. I think definitely it helps, my dear students. I'm little shy also, but I think good that you communicated, because this whole effort, my dear students, is not the one-day affair what you see here, and the very purpose. So without taking too long, let me Janani Janmabhumischa Swargadapi Gariyasi, behalf of the bodies of trustees and our revered founder, Professor Dr. Vishwanath Karad sir, all the student bodies, our Vice Chancellor, our Chief Academic Officer, and so many other group of institutions,
behalf of them, let me first of all welcome today's keynote speakers of today's this 15th edition of Indian Students Parliament, Bharatiya Chhatra Sansad, the Honorable Speaker of Delhi Vidhan Sabha, Shri Vijender Gupta ji. Thank you for your participation today. You have come from Delhi. I really respect your commitment. You participated also in National Legislators Conference in Delhi, in Mumbai. And again, we are meeting here almost third time. Thank you. And also from the Vidhan Sabha Secretary Mohoday, thank you so much for your participation too. Thank you. So we have another senior veteran leader here sitting with us, my dear friend. We all know him, Shri Digvijay Singh Sahab. What a wonderful day today. After 20 years back when we initiated the first school of the country, the political leadership school, MIT School of Government. So Digvijay Singh Sahab is here once again after 20 years. Please give him a big round of applause. 50 years in public life, the consistently role in the ruling party, opposition party. I think post-independence era, those few leaders, the faces which are popular in the country, I think one such important face is Shri Digvijay Singh Sahab. Thank you for your participation today here. And who also fostered the idea of MIT School of Government last 20 years. He must have given, I don't know, over the 15 to 20 sessions for our regular batches. Some 20 batches have passed out from School of Government, and he's with us. And we have our Hemant. Can you just wave the hand to everybody? There are some 7 to 8 MLAs are passed out now from the School of Government, I mean to say, and the Bharatiya Chhatra Sansad exercise. Just they are putting the camera on you. Please stand. This is a purpose. So Hemant is a first batch student who has now elected as a MLA from School of Government. What a good fortune. Thank you, Hemant. We all love you. Fantastic. I think the blessing of Digvijay ji and Congress Party, you are here with your efforts of your father, mother. What a wonderful day today you are sitting here. Thank you. It gives a great satisfaction. The idea, people laughed long back that how and what way it can evolve. And there are many other colleagues who are decorating various positions. I request all of you to rise for a minute. All the alumni of MIT School of Government, whoever is there, you all are very committed. And I really, Rajiv ji, the people who showed the faith, otherwise लोग बोलते हैं अरे MBA करो, BBA करो, ये ऐसा पढ़ के क्या होने वाला है. बट इन लोगों ने फेथ दिखाया कि राजनीति में भी ऐसा ये देश का पहला स्कूल. तो इसलिए आपका भी सबका अभिनंदन. Thank you so much, my dear friends. Thank you. I love you all. So, of course, we all know Rajiv ji, you know, what a consistent effort, again, in the area of journalism, our important pillar of democracy. No words. Rajiv ji, you also, in a way, fostered this idea, giving some 8 to 10 sessions in Delhi also, in Pune also. This is, I think, third time he's coming to this campus, for particularly School of Government also. He participated on some other occasions, Bharatiya Chhatra Sansad. He is coming for the second time. Thank you, Rajdeep ji. You are an institution builder. We all know those private channels era in the country, how it evolved, my dear students. You know, I always say, Rajdeep ji, that who are those 5-6 influencers in the country? And cinema, media, politics, religion, education centers, these are 4-5 important, you know, areas which are always highly influential on the society. You know, today also religious gurus, you know, the media houses, the cinema, what we see, the impact of cinema, we see so many wonderful movies. And education centers also, they have a very important authority, power and influential messaging through you people, my dear students. So I'm glad that such an institution builder, Rajiv ji, with a very thoughtfully we requested you that this session in the previous editions, in 3 long days, Speaker Mahoday, Gupta ji, there are 10 speakers every year come.